Cross-examination is a word which is like attraction in the any trial, and in the when you go to the court premises, if you ever heard there is a cross-examination going on in that courtroom, you actually rush to that courtroom. And this does not happen with only juniors, with a lawyer of my stature and also the senior lawyers. People go and sit and to listen the cross-examination, because that is the crux of the matter which is going to come out, and how the witness falters, how the lawyers take the cross-examination and bring out the truth. So this is a very important part of any trial, whether civil or criminal or any kind of family matters. And for any purpose there, if you have to get the truth, cross-examination is a, I would say, strongest tool which every lawyer should have the mastery over it. Now, today we will take only the beginning part, or I would say introductory part of the cross-examination. Now, the roots of the cross-examination you will find in the Evidence Act. The Indian Evidence Act speaks about the cross-examination. Now, is the cross-examination directly we are going to do? No, there is an examination chief by the prosecutor or the complainant's lawyer, and the defense counsel in the criminal matters, on the respondent counsel in the civil matters, will go for the cross-examination. Now, cross-examination is something where you have to learn so many things, but the first ever thing I would ask all of you to write down, that you should have a mastery over your facts. See, nobody can deny the facts. When we are in the common language and common parlance, we speak, but this is fact, but this is fact. Whatever may be the you may be speaking, but this is the fact. Same thing I'm telling you, all of you, that you should have a mastery over the facts. If you have the mastery over the facts, whatever story is narrated by the witness, you will be able to find out, elucidate the truth from it. So always remember that you should have a mastery over the facts. Now, this knowledge of the facts, from where it will come? I will say, who can teach you cross-examination? Your client will teach you cross-examination. In many of my matters, I have taken the help of the clients, because you will never know what is to be asked. You will only have a charge sheet in the criminal matters, in family matters, the pleadings. Now, by reading these in civil matters also, by pleadings, you will not understand. There may be some improvement, there may be contradiction, there may be omissions. But these are all different parts which will come into play only after the examination chief is taken place. But you have to prepare yourself for cross-examination on the spur of the moment. Every time the judge may not give you the date. So always remember, the first thing, you should have a mastery over the facts. That is the key. That you should know what has happened around the case. See, nobody goes and kills somebody. Nobody goes directly and go and file divorce case. Nobody goes directly and file a property dispute suit. There must be a story behind a story. And that is the fact you need to find out. Once you find out that, you have a mastery over it, write down your facts. Secondly, you sit with the clients and read the charge sheet or the pleadings to him or her. If your client knows what is there in the papers, they will say, no, this is not true. That was the reason. There may be a divorce petition where a 30 years marriage has taken place, and the husband said, she has never cooked for me. Now, there may be so many witnesses to this, which you can bring later on, but there may be photographs where puja has taken place. There may be birthdays, there may be parties where a lot of people have gathered. There may be so many things. So nobody will believe, but you have to bring out some facts before the court, that the husband cannot just get up and say, no, she has not cooked for 30 years. And now I want to separate from her. I want to take divorce from her. So you have to bring all these facts on the forefront. And these facts can be brought, or the narration of these facts can be brought back to the court or in the forefront of the court only when you know the case. So first thing, you should have the mastery of the case, over the facts, over the story behind the story. Also, you should have a detailed meeting with the client. That is called the conference. You have to read every paper of the court to the client. So you cannot just go and say, no, I will take the cross, I have 20 years experience. No, that is not the case. Please read the papers carefully, bring it to the knowledge of the clients, and understand
what is the client saying and what is written in the paper, and these things you can take in the cross examination. I will, in later parts I will come how we can build the questions also on that. Now, another very important part of the cross examination, how it is conducted, procedure. What is the procedure in the court? Now, in the procedure before the court, four people are involved. This is very important. You cannot go on running commentary. How we argue the matter, we just go on. We don't even look at who is hearing or who is not hearing, whether the judge is paying attention or not. See, this is very important. Whenever you are arguing the matter, also see that judge is trying to, if it's a division bench, they are talking to each other. That time you have to keep your mouth shut. Keep a peace for 1 minute and understand what the judge is trying to understand. Whether he wants you to stop or whether he wants to ask some question to you. Secondly, when you are taking cross examination, always remember the typist, the judge, witness, and yourself as a lawyer. There are four people involved. How the procedure is very simple. If you can understand and just observe this, whenever a senior lawyer is taking a cross exam, just observe it. He will first put a question to the witness. Now, witness will answer. Now, whatever the witness will answer, the judge will again pronounce the same words, whatever the witness has said. And same thing, the typist will type. Until the typist types it, you have to keep yourself shut your mouth and look at all the people, what is going on. See whether you have to see this procedure is properly done. If you put one question to the opponent, that is our witness, and she in the cross examination, he or she answers that, and second, you go directly to the second question, you see that the judge may not be able to type it. The typist may not type it. And you're completely, that cross examination will be vanished from the all the papers. So what is the use of that? It will be just a running commentary. It cannot go on like running commentary. So always remember that whenever you're taking cross examination, go slow, super slow, because you have to see what the judge is saying and what the witness has said. Sometimes witness is saying something else, judge may translate into English language something else, and there you have to find out, because there may be a possibility, there is a possibility of error, because four people are involved. So एक कहानी यहाँ से चार लोगों तक जाएगी तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होता है. That is a whispering. It is like a whispering, and the story will change. So you have to remember the story shouldn't change, because whatever question you have put, that answer which the witness has said, the judge repeats the same thing and typist type the same thing. That's why take a cross examination paper that and the same day. If you can ask the cross examination, ask the typist that give me a copy and read then and there. Another thing you can do, if you are junior, you can take your friend, tell him or her to sit beside you. So he will see, it is very difficult to pay attention to all these four things. So you can tell her or him that pay attention what the typist is typing, what the judge is, because sometimes it is very difficult to hear. Maybe commotion in the court premises, maybe there are some other reasons, maybe somebody is speaking at a very lower pitch. That time you will not understand. So this is very important, the procedure to understand. So see that your question is answered and it is repeated by the judge, the answer is, and that same thing is typed by the typist, and you take the copy. In fact, there is a fifth stage is also involved. Next is very important part, handling of the witness. You have become a very big lawyer, fine. The witness is just a small man, your peon or a carcoon, or whoever it is. It may be a police officer. It may be a simple uncle, auntie, whoever it is. You have to address the witness with, in our country, we have always elderly people, we respect people. We cannot just go and tell, Kamlesh, were you were present that day? Have you gone there? No. Kamlesh ji. You can use this word ji. If it's an elderly person, bhai saab, some words you have to use. They may, if and most important part, don't try to speak in English and the witness is not able to understand. It will go bombarding and she or he will not be able to answer. Ask in a question which is that witness can understand. If witness is not able to understand your question, your language, you are speaking Hindi, and the witness does not have the I would say he or she does not know much of the Hindi. She speaks Hindi, Gujarati. Then I understand you cannot speak Gujarati, but try to come to her or have an interpreter.
You can always see, read the evidence that you can have interpreter. You can, I have gone to Bangalore once. I didn't know the local language. So I had an interpreter with the permission of the court. So if there is a witness is Gujarati in Maharashtra, you are speaking in Hindi or English, and the witness is not able to, she's an old lady, 70 years old. She may not be able to understand your Hindi, or even in English, forget about English. Then you have to have interpreter. And if you cannot have interpreter, try to say words which she or he will, witness will understand. And respect your witness, never insult your witness. You can annoy your witness. आप उसको annoy कर सकते हो कि आपको आंसर मिल जाए what you're seeking, but don't insult the witness. He is just doing his part. You may be doing your part from the side of the as a defense counsel, as an opponent's counsel, but he or she is coming from the complainant side. So both sides should have an equal respect. So respect the witness, never ever insult that. That is the first rule I would like all of you. And whether you are young, whether you are old, you have no right to, I would say, insult the witness or use any other words like that. And that will raise the judge as well, all the staff also. And on the contrary, if you speak with respect, what will happen? The witness maybe will come under your impression. And she, when the moment you say Bharat ji, the moment you say Sanjay ji, if an elderly person, सर जी आपने कैसे किया था ये, सर आप वहां पर गए थे क्या, if you're elderly lady, मैडम आप वहां गई थी. Sometime there are witness are IS officer, IPS officer. You cannot just address their name just because you're in a position to cross examine. I have once examined a sitting judge of the civil court. I was actually afraid and nervous that how I will be able to. But that man was so nice. He said, you do your duty. Don't be get impressed that I am a judge. You ask your questions. Now, after the matter was over, I went personally and said, I'm sorry, sir, if I have crossed my limit or I was rude while asking the question. The word is that you cannot be rude. Then he said, no, you did your duty. But then I did my duty with firmness. But you do your duty with firmness. But don't be rude. Don't insult your witness. Be humble to the witness. There may be witnesses which are old people. Ask court, give them a table or the chair to sit. See, these are the gestures which will resolve the matter in the arena of the, I would say, law. So respect your witness is the most important part. If you learn half of the cross-examination part would be, I would say, super easy for you. Next is preparation for the cross-examination. Now, when you say for preparation of the cross, as I have said in the beginning, that how we can do, you can call the client, have the conferences, and also you can read the charge sheet. If it is a criminal matter, if it is a civil matter, you can read the pleadings to the client. But beyond client, we have to research something. Now, it is very difficult to jot down the questions in a proper way, because one question you will be asking on the how it happened, another question whether you were present there. So make a part in the cross examination. I will give you, recently I was doing a cross examination, and there I have prepared about 150 plus questions. It was a marriage which was of 30 years, and there was a lot of allegations from the husband side. And wife was saying, I have stayed with that man for 30 years. The daughter has grown about 26 years old. How it is possible that I have not cooked for this man? I have done so much for him, Anita. How can he say like this in the court? I said, wait. I will try to find out. There were a lot of things which were not in her pleadings because the matter came halfway to me. There was some other lawyer appearing for her, and the matter came halfway to me. So I was not doing it. I was unable to do anything changes in the pleadings which were already before the court. It was actually for cross examination. Now I will tell you, just for to understand that what preparation you can make. I was thorough with my facts. I must have met that lady 5 to 6 times. If I see, it was a corona time. What I did, I tried to speak on the phone, WhatsApp call. I told her, you go on, you just speak what happened in your life. And I was just registering everything in my mind. Now, when I was registering everything in mind, the whole her life flashed before me. And when her whole life flashed before me, I knew what has actually taken place between this husband and I. There may be many mistakes from my client, but I am paid to defend her. So my job was to bring out the truth and what allegation he has put, husband has put. We have to vanish that.
So I was bringing that dutifully the wife has done everything for her, for him, and also for her daughter. Now, see, I was so prepared. For 4 hours, I was dictating 150 questions, and my two juniors were not able to match with my speed. I was not even looking at any of the papers. I have just mastered the facts, and I was just giving her part A, before marriage, what has happened, part 2, immediately after marriage, part 3, after the child was born, part 4, how he was his schedule. He was a very big businessman. He is a big businessman today also. So he was traveling constantly. Also, there were so many functions. There were these family picnics. There were photographs also. Also, he was sick and she was there for all the time in the hospital. And then there were allegations that she has taken so many trips out of India. I wrote all the trips. In fact, I remember all her 9 to 10 trips of the foreign countries, and also the Indian I have not written, but there were many. But all the 9 trips, only one trip she has gone single. That also with the permission of the husband, because she being a wife, the Indian any lady when she goes out and take a visa, if she is married, she has to take the husband's consent. Only then only visa will be approved. So I have seen that that time also she has gone with the daughter and their visa, the husband has signed it. So not a single trip she has taken outside. That was the allegation. She was always throughout traveling. She was not looking. She was having foreign trip at the cost of the husband and all that. And she was helping the father-in-law in his business. I brought this everything in the cross examination. So though she was not working, educated, but she was helping her father-in-law. She has gifted her mother-in-law so many times. Her mother-in-law was very fond of the books on the Marathi literature. So she was always gifting her books. She has also gifted so many things to all the relatives, also to the sister of the husband, and they were on the very good terms. I used to bring late night food. I told, and that is what she was not cooking. I asked her why it is so. She said, because he used to come late, I had cooked the food in the 8 o'clock. And he said, मला गरम जेवण पाहिजे, मला थंड जेवण लागेल. That's why he used to order the hot food from the outside. See, and because he used to drink late night, and because of drinking habit, there were counseling, psychiatric treatment on him. So actually, the husband was at fault. See, in my one breath, I have told you everything about one matter. How the cross examination should take place. If you actually concentrate on your pleadings, on the client's consultation, that will not be. See, 30 years marriage is not I have met her once and I knew everything about her. Now in last 3 to 4 minutes, I have projected everything about their life. So you may be having the picture what has actually happened. This picture should come in front of the judge. जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो जज को पिक्चर लगना चाहिए कि जैसे मैंने अभी बोला है कि मैंने कल मेरी बेटी के लिए एक छोटा सा सफेद हाथी प्लांट का जो प्लांट में होता है वो खरीदा है ना. सबके दिमाग में आपको क्या लगा होगा, एक चीज आया होगा, सफेद कलर का हाथी, प्लांट छोटा होगा ना. मतलब देखो, तो जज को आपको यही स्टोरी बताना है. आपका जो बोलना ऐसा होना चाहिए जज के सामने कि जज को बोला ये शी इज स्पीकिंग दी ट्रूथ. मैंने जैसे ही बोला सफेद हाथी, सफेद आपको चित्र दिखा, हाथी दिखा, छोटा सा प्लांट का पॉट होता है. तो सी यू हैव टू रिमेम्बर, अगर आपको ये नॉलेज अच्छे से मिल गया और आपको पता चल गया कि नरेशन. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट वन जजमेंट के जिसमें लिखा था, वन हेडलाइन वाज, यू शुड बी अ स्टोरी टेलर टू अस, यू शुड नो योर फैक्ट्स. आपको कहानी बताना है तो यू शुड, आपको जो, और कहानी का मतलब ये नहीं कि आपको कहीं से भी नानी की कहानी बतानी, आपको क्लाइंट का कहानी इधर बाय हार्ट होना चाहिए. यू शुड नो एवरीथिंग इन योर माइंड एंड शुड कम ऑफ योर माउथ, और उसका सोल आपको जानना चाहिए. सो मेनी टाइम्स ना यू हैव पुट योर सोल एंड हार्ट इनटू द मैटर. क्यों हम लोग बोलते हैं जब स्कूल में होता है बाय हार्ट किया है, मतलब यहाँ से मुझे मालूम है. तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द क्रॉस एग्जामिनेशन. नो बुक्स कैन टीच यू ऑल दिस. This is completely practical, and this practicality will only come when you put your heart and soul into the matter. I have asked my juniors many times, what kind of lawyer you are expecting if you are a client. तो बोलते टाइम पे आने वाला चाहिए, अच्छे कपड़े, साफ सुथरा रहने वाला चाहिए, उसको अपना केस मालूम होना चाहिए. सेम थिंग हैपेंस टू यू. What kind of doctor we want? He should be available. He should be keep picking our phone. He should be giving the right advice. So what kind of lawyer you are to your client will decide what kind of
lawyer you will become. Always remember that give your best to your clients. ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आई हैव सीन एग्जामिनेशन चीप चल रहा है, फाइल का पता नहीं है और सिर्फ नोट डाउन कर रहे हैं एंड डायरेक्टली क्रॉस एग्जाम विदाउट द चार्जशीट. नो, दिस इज नॉट डन. प्लीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू whatever senior level you may be, don't go. Bring, if your file is not fine, ask somebody at your home कि फाइल में से आपको स्क्रीनशॉट भेजे, आपको फोटोग्राफ्स भेजे, take out the printout, read it, ask judge 1 day time. If you ask 10 days time, they will say no, we are not giving. But if you ask them 1 day time, 2 day time, they will definitely give you 5 days time, 10 days time. Prepare yourself and go. Don't ruin anybody's case, please. We are here as an officer of the court to help the judges, help our clients, help the court to come out with the truth and give a fair justice to complainant as well as accused. क्योंकि जब भी कोई क्राइम भी होता है तो इट्स नॉट इन पोजिशन somebody just go and उसको स्टेप कर दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर इज अ रीजन बिहाइंड. वो स्टोरी लेकर आओ. या तो उनका कर्जा था, या कोई दुश्मनी थी, या उसने बहुत रूडली बात की होगी, इंसल्ट किया होगा, तो वो प्रोवोकेशन भी तो आना चाहिए क्रिमिनल मैटर्स में. फैमिली मैटर्स में भी कोई रीजन होगा, तो दैट यू शुड बी एबल टू ब्रिंग दैट पार्ट टू द कोर्ट. वो कोर्ट को आप जब लाओगे तो कोर्ट विल बी एबल टू जज. रिसेंटली इन सुप्रीम कोर्ट देयर वाज अ फंक्शन where Justice Indira Banerjee was there. What was she telling? बहुत beautifully उन्होंने बोला कि if we have to give good judgment, no, the lawyer should help us. How? They should argue good. They should quote good judgments. They should give a good citation to us. So we will give good judgments. तो एक सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लेडी जज बोल रही है, जस्टिस बोल रही है इंदिरा बैनर्जी कि when you give us good material, we will give you good judgment. एकदम छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी एंड डीप मैटर. आपने इतना सा छोटा सा चीज समझ लिया तो आई डोंट थिंक एनीबडी कैन स्टॉप यू. सो इफ यू डू वन मैटर प्रॉपरली फॉर जूनियर्स हियर, आई विल टेल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको नेक्स्ट मैटर बहुत ही अच्छा आएगा. एंड दैट वन मैटर विच यू डू सक्सेसफुली, इवन इफ यू लूज इट, अगर सक्सेस नहीं मिला, द क्लाइंट विल से नो यू ट्राइड योर बेस्ट and he will say no, this lawyer is good, please go to her or go to him. So I hope the preparation part also मैंने आपको बता दिया है. This is beyond books, right? Now cross examination lengthy होना चाहिए क्या? Now don't go on my cross examination कि 150 आपने क्वेश्चन निकाले. No, that is a different matter. In criminal matters what I have learned from my seniors, जितना cross examination shorter होगा, acquittal का chances ज्यादा. I will tell you why. एंड जितना क्रॉस एग्जामिनेशन लेंथी होगा, चांसेस ऑफ द कन्विक्शन, सजा होने का चांस ज्यादा. एक्विटल कब होगा? जब वो शॉर्ट होगा. वाई ऐसे क्यों बोला जाता है क्रिमिनल प्रैक्टिस में? आई हैव डन लॉट ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्ञान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो उसमें ऐसे बोला गया है कि जब क्रिमिनल प्रैक्टिस में, आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल, क्रिमिनल प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि कभी भी अगर आपने क्लाइंट को देखा है वो खड़ा है एंड ही स्पीक समथिंग, वो 10 साल के बाद बोर्ड पर मैटर आता है. व्हेन ही इज स्पीकिंग समथिंग यू हैव टू नोट डाउन, वही आपको ध्यान रखना है. एंड देयर आर 3 एक्यूज. आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल. A, B, C. You are for C. He has spoken everything against A and B and he has not spoken C. And आप खड़े रह गए, उनको बोला कि आपने C के whether C was not present there, right? Then he remembered, no, C was also present. हो गया बंटाधार पूरा. मतलब then he remembered C was also present. तो आपने अपने क्लाइंट का गला खुद ही काट लिया. तो always remember कि you have to sometime decline the cross examination when the witness does not speak anything against you. Always remember when the witness, if it is an accident case, बोलता है आपका क्लाइंट अंदर कार में बैठा था, कार में बैठने से उसने एक्सीडेंट नहीं किया है. डोंट आस्क देम इवन इफ इज एक्यूज. देयर इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल. तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू हैव टू डिक्लाइन द क्रॉस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट आई विल टेल यू इज अबाउट द व्हाई शॉर्टर क्रॉस एग्जामिनेशन. मोस्टली इफ यू रीड क्रॉस एग्जामिनेशन, कोई भी आर्टिकल इंटरनेट पे डाल दो, ओनली आस्क लीडिंग क्वेश्चंस. व्हाई लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन का मतलब है यू आर लीडिंग द विटनेस. अब लीड का मतलब यह है कि आप उसका नेतृत्व वगैरह, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है. लीडिंग द विटनेस मींस यू आर एक्चुअली
giving him something to eat and he has to eat it. लेकिन वो अब जैसे छोटे बच्चे को हम अगर मीठा चीज देंगे वो खा लेगा, करेला दे दीजिए तो वो नहीं खाएगा. So he will ask questions. Always remember, you have to give something that is called suggestions in the form of. It is true that you were working as a professor in that college. Naturally, he has to tell yes, right? So ask these leading questions. So cross examination हो सकता है, investigation नहीं है. It's not an interrogation. It's a cross examination. So don't be in a form of police officer who is investigating. Don't investigate your case. Already investigation का charge sheet डाल दी है 300 पेज की 20 पेज. Ask only leading question. Charge sheet में there may be hundreds of it hearsay evidence रहेगा. No use unless it is corroborated by some other good concrete evidence. So always remember, whenever you are doing cross examination, ask leading question and shorter question. So you should always be prepared for your cross examination. And this leading question will be only what he has actually spoken in the court. Now here we can think about the omission and contradiction, whether they have to be brought before the court in record. I would say wait for some time. I will explain that. That is a very deeper study again, and it is a very I would say you have to study a deep lot. कौन सा contradiction लेना है, कौन सा omission लेना है, and contradiction का भी एक style है लेने का. Style से ज्यादा मैं बोलूंगी procedure है. आप directly contradiction नहीं पूछ सकते. There is a way for asking contradiction. There is a way to ask the question. I have my personal videos which I will be sharing a link of the same. Otherwise, you can find out on the internet. Omission contradiction कैसे लेना है. There are also improvements, embellishments also. So see, cross examination के बहुत सारे parts है. It's a very vast. I was telling you, Komal, it's a very vast subject. I will not be able to cover in one. But today I'm taking just the basic thing. That is mastery of facts, leading questions. Leading question, I have a special video. Go through it and read some judgments also. I mentioned few judgments there also. Now next is what not to ask. क्या नहीं पूछना है. Sometimes you are asking too many questions which was not there on record, और वो charge sheet में था, ये charge sheet के beyond था. You are bringing everything. Sometimes the witness does not recognize your client. Keep quiet. Sometimes you say, I don't know whether he is. आपने इसको पहचाना कि नहीं पहचाना. Don't ask that questions because उसका जो feeble memory है, कमजोर memory है, वो आप उसको record पे मत लाइए. If you bring that everything on record, it will be a complete mess. Understand that. So always lengthy nahi, short cross examination होता है, especially in the criminal matters. Also, I would say be prepared. One more thing I would like to touch in today's topic is having your facts correctly and also with the proofs. I was cross-examining domestic violence case. I'm giving an example, तो आपको सुनना थोड़ा understand करना better रहेगा. Now here in domestic violence, I was for the husband. It was also 10-12 years old marriage, and the husband was not willing to let the wife go, but there was a child also, and the wife was not ready to come back also. Now in this matter, what happened? I was cross-examining the mother-in-law of my client, यानी petitioner की wife, applicant lady जिसने domestic violence किया. Now this lady was telling कि इन्होंने dowry लिया है शादी में. बिकॉज मैंने पूछा आपके साथ तो इन्होंने कुछ बुरा बर्ताव नहीं किया ना मेरे क्लाइंट ने, क्योंकि आप तो हमेशा अलग रहे, मेरे क्लाइंट तो आउट ऑफ इंडिया थे. यू हैव नेवर स्टेड विद. नो, आई हैव सेंट हिम मनी. तो मैंने बोला कैसे? नो, आई डोंट रिकलेक्ट, मे बी कैश दिया होगा. सो ये तो मतलब मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, बट आई वाज रेडी विद माय फैक्ट. मैंने बोला आफ्टर योर डॉटर्स मैरिज टू हिम योर सन गॉट मैरिड. शी सेड यस. तो मैंने बोला आपके जो बेटे की शादी हुई उसमें मेरे क्लाइंट ने आपको 5 लाख रुपए दिया. द मोमेंट आई सेड दिस, शी वाज शेकन, बट शी मुझे याद नहीं है. बट आई वाज रेडी विद माय लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें बैंक स्टेटमेंट था, बिकॉज द 5 लाख मेरे क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया रहते थे. यस, ट्रांसफर्ड इन दी ब्रदर्स अकाउंट. देन ऑल्सो दैट लेडी केम डाउन, ये तो मेरे बेटे का अकाउंट है, मुझे नहीं पता. बेटे, तो मैंने बोला बेटे का मैरिज हुआ था, ये तो पता है ना आपको? देन शी सेड यस यस. मैंने बोला ये आपके, बट सी judge was, I won't say, of course it was a document where the money was transferred to the brother, wife की brother को. But when I come with the papers, the whole scenario change. कोर्ट में काफी चेंजेस आ गए कि आपने एक तरफ तो डोमिसाइल में डाउरी का लिखा है. देयर वर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो,
but this was one example I'm giving. So I was ready with my that ये आपके बेटे का अकाउंट है कि नहीं एसबीआई बैंक में होगा. सी एंड द डेमेनियर ऑफ द क्लाइंट जो क्लाइंट का जो बिहेवियर होता है जज समझ जाता है. तो ट्रायल कोर्ट के जज को हमेशा क्यों बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि दे हैव द फर्स्ट हैंड चांस टू सी दी क्लाइंट्स. तो इसलिए आपको ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स उनको सुपरस्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे हैव द फर्स्ट हैंड चांस टू वो मैटर को तोड़ मरोड़ के अच्छे से ला सकते हैं जो ट्रूथ है कैसे भी किसी भी तरह, क्योंकि उनको स्टडी के लिए टाइम है. हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जहां जैसे से ऊपर मैटर जाता है सिर्फ पेपर्स पे चलता है. तो जो भी आप एग्जामिनेशन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन लेंगे, री एग्जामिनेशन लेंगे, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी. And these papers will be useful to Supreme Court lawyer also, because I am an advocate on record in the Supreme Court. I know कि ट्रायल कोर्ट के लॉयर ने जो भी मेहनत किया है, this is going to help me. So always remember the trial court lawyers are the superstars. I still respect them and I still do trial court matters because उसमें आपका पूरा कस लगता है, आपकी मेहनत लगती है, आपको पता चलता है. And the client का real justice आप पहले दिन ही दिला सकते हो वहां पर, पहले I would say at the first stage of the case. So always remember trial court lawyers, I am again saying they are superstar. और superstar उसी को बोलते हैं जो मैटर में अपना पूरा जान डालता है, heart and soul. So I cannot suddenly go to Supreme Court and say no sir, my client has transferred money. He will ask me, have you taken this ground, this question in your cross examination? Then it will be really difficult for me coming back, remanding back the matter. And cross examination may not happen because जो pendency है कोर्ट का वो काफी है, and they may not remand the matter back. Understand the technical difficulty of the courts also, judges also. So always remember आपको जो भी सिक्सर मारना है, सेंचुरी मारनी है, वो ट्रायल कोर्ट में ही मारनी है. And to all the juniors I will tell, please try to attend all the trial courts for next 5 years. You have to, आपको चैंपियन बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, तो ट्रायल कोर्ट का बनना है. फिर आपको जहां पर जाकर खेलना है खेलिए. You go to Supreme Court, you go to any of the high courts. I tell you, trial court lawyer can एकदम बिंदास with lot of confidence they can speak because उनको तो बेसिक मालूम है ना, और जिसको बेसिक मालूम है वो कुछ भी कर सकता है. ये वार्म अप है आपका, ऐसे लॉयर, अच्छा लॉयर बनने का वार्म अप है ट्रायल कोर्ट का प्रैक्टिस. तो गिव योर 5 years in the trial court, that is जिला सत्र न्यायालय and the magistrate court. अगर आप गांव में रहते हो तो JMFC in the Mofizul area. There are 2 judgments I would like to share. One is Sueb Ilyasi case, India's most wanted. अगर कुछ लोगों ने देखा होगा यहाँ पर तो अभी भी कुछ एपिसोड्स अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट. See that one case. तो सुएब इलियासी वो एंकर थे इसमें, और उनके साथ एक घटना घटी थी. उसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, आई वुड से कि दैट हैज टॉट मी अ लॉट. अनदर केस ऑफ जेसिका लाल मर्डर केस, जिसपे तो मूवी भी बनी है, बट डोंट वॉच मूवी, वॉच दिस, रीड दिस जजमेंट्स 5 times 10 times. एंड उसमें भी कुछ जजमेंट्स रेफर किए, रीड दोस जजमेंट्स. And I will request you to stick to the questions which are related to cross examination, because I want to concentrate on the cross examination today. And this is what I wanted to have the first hand knowledge of the cross examination. This is going to help so many juniors. My thirst was not that I can teach anybody cross examination. There are no books which can teach. There are no lawyers which can teach. It is the study. It is the your regular practice. See, nobody can teach you anything. Your practice, your continuous work will teach you. So you have to go on practice and will become better and better as a lawyer also. If examination in chief and cross examination is completed, then after 3 years, prosecution file a application under section 311 CRPC for further examination in chief. What it's acceptable or not, if any case law, please tell. Okay, 311 also I have done a separate video on this. Good question, because after 3 years, if somebody is coming to fill the lacuna, so you answer this, and there is one very good judgment. Right now I do not have the citation, but I have one matter I did not allow. उसमें एक witness आके सब बोल के गई, and later after through public prosecutor they made an application. See, though it was from public prosecutor, I replied it. They have just come to fill the lacuna. उनका कुछ gap रह गया. They cannot fill the lacuna. So you can always resist this application by replying it and arguing it and giving the good judgment.
If you give the good citation, if you convince the judge that it is purposely done, then the court may refuse or may reject their application. In civil cases, cross-examination should be short or lengthy. As I discussed कि civil cases में भी मतलब ऐसे बोला जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन शॉर्ट होना चाहिए बिकॉज द जज में सी इफ इट इज 30 पेजेस क्रॉस एग्जामिनेशन जज में मिस सम पॉइंट्स क्रॉस एग्जाम थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए थोड़ा सा ही होना चाहिए बट यू हैव टू ब्रिंग ऑल द फैक्ट्स तो द बेस्ट वे आई विल टेल यू इसमें क्या कर सकते हैं विच आई डू नॉर्मली क्योंकि सिविल मैटर्स में क्रॉस एग्जामिनेशन लेंदी हो ही जाता है बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट राइट सो व्हाट यू डू वन थिंग ओनली आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप उसको पार्ट में कीजिए ए बी सी डी ई एफ जी दैट इज ऑन योर पेपर्स यू कैन नॉट टेल द जज हैव द पार्ट्स जैसे इफ इट इज सिविल मैटर transaction has taken place as she is the civil matter transaction has taken place how they were introduced to each other how the goods were sent contract was signed फिर next part dispute कभी हुआ तो ask the judge to change the para तो 1 2 3 जो पैरा चेंजेस होगा विच बहुत कम लॉयर्स जजेस को बोलते हैं पैरा चेंज कीजिए वो बोलते ही जाते हैं रनिंग कमेंट्री नो आज दी जज टू चेंज द पैरा तो आप है ना पार्ट कर लीजिए तो लेंथी करने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है बट इररिलेवेंट क्वेश्चंस मत पूछिए प्लीज आई हैव सीन एनीबॉडी आस्किंग एनी इररिलेवेंट क्वेश्चंस वो सब नहीं पूछना है एक मतलब इसने बोला था कि आप अपने आप को क्या माधुरी दीक्षित समझती है ऐसे बोल दिया था ऐसे मत इंसल्ट कीजिए और दूसरा जज ऑल्सो गेट एंग्री देन वो पलड़ा है ना चेंज होता है ऑलवेज रिमेंबर देर आर मेनी फैक्टर्स इफ यू गो एंड टेल समबडी प्लीज गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर 100% ही इज गोइंग टू आप चिल्ला के बोल दो आपको नहीं मिलने वाला शायद पानी मिल भी जाएगा तो आई डोंट नो कैसे मिलेगा The respondent have submitted the written statement and he has stated in the written statement that I am attaching the evidences and now I am attaching the sentence says attaching the evidences but he did not attach the evidences and that is not attaching documents होते हैं exhibits होते हैं अनेक्चर होते हैं एविडेंस अटैच नहीं होता एविडेंस तो कोर्ट में चलता है करेक्ट तो वो एग्जिबिट्स अटैच उसको बोले टेस्टिमनी द वर्ड इज टेस्टिमनी जो कोर्ट के सामने बोला जाता है व्हिच आई स्पोक इफ यू वर बिगिनिंग सिंस बिगिनिंग यू वर इन द सेशन यस मैम हाँ तो वो जो 4 चीजें मैंने बोली ना देयर आर 4 पीपल इन्वॉल्व वो टेस्टिमनी एविडेंस है ठीक है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ऐसा नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिया आपको प्रूव करना है थ्रू विटनेसेस it's not production is not sufficient okay so it's about the question is about cross examination so respondent have not given the exhibits at the time of submitting the WS so the petitioner's lawyers is asking to give the exhibits but the respondent lawyer is saying I will give the exhibits at the time of cross examination so is it a valid नो सी आपका कौन सी स्टेज पे केस प्लीडिंग स्टेज पे है कि ऑलरेडी एविडेंस पे है नहीं अभी तो WS सबमिट किया है अभी देयर आर सम लॉयर्स हु से कि डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल विद देम मे बी ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है दे मे नॉट बी हैविंग द कॉपीज आल्सो नो कॉपीज नहीं है तो सेकेंडरी ओरिजिनल कॉपी नहीं सेकेंडरी एविडेंस वो लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर जो आपने शॉर्ट में कहा उससे मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स है ना आपको कॉपी नहीं दिया और ना कोर्ट में लगाए राइट हाँ अब नाउ आई विल टेल यू दिग्विजय सुनो ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसका फायदा सभी पार्टिसिपेंट्स को होगा कि जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हो ना कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा है पोस्ट कार्ड है वो मिल ही नहीं रहा आप क्या करोगे कहीं पड़ा हुआ है क्लाइंट को मैंने बोला नहीं मिल रहा है पुराना पोस्ट कार्ड है पुराना ग्रीटिंग है तो व्हाट वी डू वी रेफर दैट थिंग इन दी डॉक्यूमेंट्स and say I need some time वो orally होता है mostly ऐसा नहीं होता है but if they don't produce if you are for the respondent good petitioner नहीं produce कर रहा है applicant नहीं produce appellant नहीं कर रहा है तो ठीक है about from this side अगर आप petitioner हो तो then again it is going to be a I will tell you इस side से भी आपको because I fight from both the sides तो आपको lawyer को दोनों साइड से लड़ना आना चाहिए इसलिए मैंने पूछा आप कौन से साइड से हो तो उसमें आपको ये बोलना है कि आई हैव रेफर्ड दिस इन माय प्लीडिंग्स इसलिए अगर आपके पास कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो प्लीडिंग में रेफर होना चाहिए इट कैन बी प्रोड्यूस अगर प्लीडिंग में डॉक्यूमेंट रेफर नहीं है देन यू कैन वेरी वेल टेक द ऑब्जेक्शन बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन द जज हु इज प्रिसाइडिंग और कभी कभी टू डू फेयर जस्टिस
कोर्ट में अलाउ, जैसे 151 आपको सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड पता है, या इसमें क्रिमिनल में 482 सीआरपीसी। अगर कोई चीज न्याय करने के लिए जरूरी है तो कोर्ट विल बाउंड्री छोड़ के कोर्ट उसके बियॉन्ड जाएगा टू डू फेयर। So it is fine after when the लेकिन cross उन्होंने रेफर किया examination. है क्या? उन्होंने रेफर किया है रिटन स्टेटमेंट में? हाँ उन्होंने रेफर किया है, but रेफर किया, is दे it कैन, बट यू कैन ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्शन। Ma'am, one participant is asking, is there any book on the art of cross examination for reference? मैं अभी कोमल ने मुझे फोन कर लिया तो मैं दिल्ली में थी, मैं कल रात को ही बॉम्बे आई, तो मुझे भी मालूम मुझे स्पीच देना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ पाई, बट आई वाज रीडिंग वन लॉयर्स क्रॉस, बहुत मोटा बुक था, आई कुड रीड बेयरली फ्यू आवर्स, बट आई विल टेल यू कि आपको रीड करना चाहिए। देयर आर प्लेंटी ऑफ द बुक्स, आई विल टेल ऑल ऑफ यू कि लैपटॉप बंद करना है, मोबाइल बंद करना है, एंड अगर रेगुलर इन अ वीक कोई भी छोटा कोर्ट भी होगा, आप उसका लाइब्रेरी में बैठना शुरू कर दो, और क्रॉस एग्जामिनेशन की बुक है, आप किसी भी गांव में रहते हो प्लीज स्टार्ट रीडिंग, वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आपको वहां पर जजमेंट रीडिंग होगा, जजमेंट रीडिंग तो इंटरनेट में मिल जाता है, लेकिन जो कमेंट्री की बुक होती है, रीड दैट, इट वाज अ बिग फैट बुक, आई नेचुरली कंप्लीट नहीं कर पाई मैं कुछ भी उसमें से, लेकिन आई वाज वांटेड टू कि कुछ बच्चों को कुछ बता दूं, कुछ मेरे को भी कुछ ज्ञान का प्रकाश मिल जाए, बट अच्छा यही रहेगा कि आप पढ़ते रहो, सबसे अच्छा है कि जजमेंट रीडिंग करो, एवरीडे रीड वन जजमेंट, और कमेंट्री वाला बुक पढ़ो। सपोज मेरे को एक क्वेश्चन कभी आया था कि मेडिकल कुछ डॉक्टर को एग्जामिन करना, हम क्या करें, तो मोदी का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का बुक है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सारे लीगल मेडिको लीगल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जो आपका किसी एक्सीडेंट है तो वो मतलब CLW क्या है वो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर के कुछ चिन्ह होते हैं कुछ, तो वो भी आपको जो साइंस है वो पता होना चाहिए। यू कैन मीट योर अदर डॉक्टर्स ऑल्सो। डेंटिस्ट आपका कोई फ्रेंड है और जो उसने 325 का केस है, उसने मुक्का मारा और उसका दाढ़ टूट गई है, तो वो उसमें वो चित्र बनाता है, बोलते डेंटिस्ट ने ऐसा ऐसा टूटा है, तो अंडरस्टैंड फ्रॉम योर डेंटिस्ट कि ये क्या है एक्चुअली। तो ऐसा कोई बुक मतलब मैं प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी, बट मैं आपको बोलूंगी कि आप रीड कीजिए, कीप रीडिंग एंड डिवोट सम टाइम इन द लाइब्रेरी ऑफ द कोर्ट, 1 hour इन अ वीक, आई एम टेलिंग यू, और फिर धीरे धीरे आपका लगन बढ़ेगी तो आप करोगे। If the defense lawyer hasn't shared a strategy on cross for 498A, 406, 354A to the client, is it normal? What is the दिस इज नॉट accused role? लीगल क्वेश्चन, ये क्लाइंट और वो झगड़ा लगाने का काम है, दिस इज बिटवीन द क्लाइंट एंड द, इसलिए मैंने बिगिनिंग में बोल दिया व्हाट काइंड ऑफ लॉयर यू वुड लाइक टू बी। मैम एक मैटर है मेरे पास, वो 428 471 का है। हाँ उसमें सेकेंडरी एविडेंस प्रोसिक्यूशन लीड कर रहा है। हाँ, और उसमें एक्चुअली उन्होंने जो सेक्शन 65 का एप्लीकेशन देना था वो हाँ चीफ के बीच में दिया है। दे सकते हैं। ओके, और उसमें आप जो आपका ऑब्जेक्शन लीजिए ना, आप मैंने लिया है, लेकिन आपने अभी बोला कि क्रिमिनल कोर्ट बियॉन्ड जा सकते हैं। नहीं क्रिमिनल कोर्ट नहीं, सी अगर आप सुप्रीम कोर्ट का देखिए आर्टिकल 142, आजकल सुप्रीम कोर्ट में बहस क्या चल रही है कि आर्टिकल 142 में डिवोर्स ग्रांट दिया जाता है, मेरे भी एक मैटर में दिया है, जस्ट 15-20 दिन पहले दिया है। तो बोलते तो वो पार्टीज वर लिटिगेटिंग फॉर 18 years, और अभी वो सुप्रीम कोर्ट उनको गाइड करेगा कि गो मैटर सेटल है, नाउ यू गो बैक टू बनारस कोर्ट फैमिली एंड फाइल देयर, दिस इज नॉट वायबल, है ना, क्योंकि वो 18 साल लड़ रहा है, अब उनको बोलो जाओ आप म्यूचुअल फाइल करो, देयर आर लॉगर्स एंड वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मुश्किल से दोनों साइड के लॉयर्स, मैं और अपोनेंट लॉयर ने कि इतना साल लड़ लिया, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, प्लीज सेटल। तो अभी आपका मैटर में आप बोल रहे कि जजेस क्यों अलाउ करते, क्योंकि उनको मालूम है अगर अपील में मैटर गया, अपील में मतलब वो ऑर्डर उन्होंने पास किया, उसका रिवीजन हुआ, ठीक है, क्रिमिनल में रिवीजन होगा, तो रिवीजन में अलाउ किया तो वापस मैटर लंबा चलेगा। ओके आई विल टेल यू, मेरे मैटर्स में क्रॉस एग्जामिनेशन सामने वाला एडवोकेट नहीं लेता है, और वो मतलब बोलते हैं कि क्लोज हो जाता है, क्रॉस क्लोज होता है, उसको मैटर स्टेटमेंट के लिए रख दिया। आई टेल माई जूनियर्स कि अगर वो लॉयर वापस आता है तो उसको नो ऑब्जेक्शन दे दो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ऊपर वाला कोर्ट उनको एक अटेम्प्ट देने ही वाला है, तो मेरे क्लाइंट का टाइम जाएगा ना, अंडरस्टैंड, माय टाइम विल बी वेस्टेड, राइट? तो आई टेल कि वैसे भी ऊपर जाके उसको टाइम मिलने वाला है, मैं कोर्ट को ये बोलती हूँ बिकॉज ही हैज वेस्टेड जुडिशियल टाइम,
impose a big cost on him. Yes. And I don't want the cost. वो cost कोर्ट को जाए, क्योंकि he has wasted court's judicial time. मेरा टाइम तो ठीक है, मेरा तो लर्निंग है. When I go to court, it's a learning, right? Yes. आपको Yes. और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कोर्ट में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. आप ऑब्जेक्शन लीजिए. हाँ. साहब अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लीजिए. मेरा एक वीडियो भी ऑनलाइन सेकेंडरी एविडेंस पे, आप चेक कीजिए. उसमें कुछ जजमेंट दिए. सिर्फ वीडियो सुनने से काम नहीं होगा. वीडियो में जो जजमेंट्स रेफर किए वो निकालिए, नोट डाउन कीजिए, indianqanun.com पे सर्च कीजिए, या कोई भी नेट पे, और उसको पढ़िए. देन यू विल हैव गुड पॉइंट्स. एंड सी, एज जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने बोला कि टू गिव गुड जजमेंट यू शुड, और गिव गुड ऑर्डर यू शुड सप्लाई मी गुड मटेरियल. यस मैम. यस मैम. हाँ, तो कुलकर्णी जी, आपको है ना अच्छा मटेरियल कोर्ट के सामने लाना है. ओके. ओके. सिर्फ अपोनेंट लॉयर से झगड़ा करने से काम नहीं होगा. स्पीक लीगली. In civil cases, does cross examination depends upon issues framed by court? हाँ, बहुत कुछ, बहुत हद तक. अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. सुनो, क्या होता है कि जब भी अगर किसी चीज पे इशू बना ही नहीं है, आप उस पर क्वेश्चन पूछे चले जा रहे हो, नॉट राइट. राइट, बहुत अच्छा एंड डीप क्वेश्चन है. उनका स्टडी अच्छा जिन्होंने भी पूछा है. वेरी नाइस. आई एम ऑल्सो लर्निंग विद ऑल ऑफ यू. गुड. आई विल जस्ट एलाबोरेट दिस. जिन्होंने भी पूछा है क्वेश्चन, अगर कोई चीज में इशू बना ही नहीं है तो आपको पूछना है. आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी, एक एग्जांपल देके है कि कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी का सिविल मैटर है, बच्चे की कस्टडी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो आप क्यों उसको कस्टडी पे क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्योंकि जब तक मैटर चला, बच्चा 18 साल का हो गया, तो कोर्ट ने इशू ही फ्रेम नहीं किया बच्चे की कस्टडी पे कि हु विल बी अवॉर्डेड द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड. तो डोंट आस्क दैट. उसमें आप है ना कोर्ट के सामने जोकर लगोगे इन सिंपल लैंग्वेज कि इनका कुछ भी स्टडी नहीं है, बिल्कुल भी है. तो आपको अगर नॉलेज नहीं है ना, तो मीट सम सीनियर लॉयर्स. नोबडी चार्जेस हियर. I am there. There are so many lawyers who will help you out. लेकिन आपको टाइम चाहिए. ऐसे नहीं कि सुबह 11 बजे जाइए. In the evening, sit in the bar room. Ask some lawyers. Some will refuse. वो नहीं सिखाएंगे. But there will be some people who will help you. और कोई नहीं मिलता है तो आप आपका एकलव्य बनिए. जजमेंट ढूंढिए. जजमेंट में से आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा. If you are from the बॉम्बे हाई कोर्ट के सारे जजमेंट ढूंढ लीजिए. उस पे सुप्रीम कोर्ट के उस लेवल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होता है. फिर भी आपको एक दो मिल जाएगा. लेकिन जो आपका रिस्पेक्टिव स्टेट है, somebody is attending from मध्य प्रदेश, I will tell them कि आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सारे जजमेंट ढूंढिए. सारे बेंचों के, जबलपुर है, इंदौर है, ग्वालियर है. ठीक है. Ma'am, one participant is asking, what if a witness dies before cross examination? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसका चीफ का वैल्यू नहीं होना चाहिए. लेकिन उसमें एक मेरे को कहीं जजमेंट थोड़ा कॉन्ट्रेक्टरी थोड़ा सा मिला, लेकिन उसका चीफ का वैल्यू नहीं होगा. बिकॉज, लेकिन वो अपना फॉल्ट नहीं होना चाहिए कि आपने जानबूझ के 10 साल क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया. ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग्स विल आल्सो मैटर. ऑलवेज रिमेम्बर दैट. इफ यू आर, मैंने देखा है 3-3 साल लोग क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. Okay, ma'am. हाँ. Ma'am, the next query is, if any witness is a government employee, then how to get official information regarding his or her presence in that particular government office on the day and timing about his presence? RTR. If we are asking any witness to come in if the court is sending summons to the witness who is staying nearby to the petitioner, and the reality was something else when it happened. Like when he witnesses that reality, and when he comes in the court and he give completely opposite, completely opposite different version. Yeah, so how do we deal with such आप किसके लिए हो? अगर वो डिफरेंट वर्जन दे रहा तो अच्छा है ना आपके लिए. मतलब इफ ही इज नॉट स्पीकिंग, लेकिन वो ओमिशन कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट कर रहे हो आप, किसी के लिए भी हो, व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हिच आई विल बी टेकिंग अप. तो वो आप जो पूछ रहे हो ना दिग्विजय जी, तो वो है उसके बारे में कि अगर वो डिफरेंट वर्जन देता है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे लेना है. ओमिशन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, इंप्रूवमेंट है. राइट. हाँ मैम, मतलब वो कम्प्लीटली झूठ बोल डिफरेंट रहा है. वर्जन बोल रहा है. मतलब वहां पर ब्लैक कार थी एक्सीडेंट में, यहाँ पर व्हाइट कार बोल रहा है. या फिर वहां पर उसने बोला कि उसको लाठी से मारा और यहाँ आकर बोला हॉकी स्टिक से मारा या तलवार से मारा. बट समथिंग else is written and something else is speaking. That is a part of contradiction. डीप सब्जेक्ट है. मैं इसमें इस सेशन में आज के नहीं लेता. अच्छा. मैं एक कॉमन मैन हूँ, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम द लॉ फील्ड, बट आई एम इन माय ओन फील्ड. तो समझो, मुझे अगर खुद को जैसे फिल्म में बताते हैं, मुझे खुद को फाइट करनी है, कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए ये जो आपकी
टेक्निकल लैंग्वेजेस है, अभी प्लीडिंग है, अभी एविडेंस है, तो उसके लिए हमें कुछ हेल्प मिलता है कोर्ट में? समझो अगर लोअर कोर्ट में कोड है ना, सी आई विल टेल यू, नॉर्मली कोड है ना, इन पर्सन है ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट कोड को भी डिफिकल्टी होती है क्योंकि लीगल टर्म्स मालूम नहीं है। जैसे मैंने अभी बिगनिंग, इफ यू वर इन द बिगनिंग, मैंने बोला कि 4 लोग इन्वॉल्व है क्रॉस एग्जामिनेशन में, ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा और वहां डर टाइप हो गया। अभी ये लीगल टेक्निकल जो है ना बात, ये आपको शायद नहीं पता होगी। कभी कभी जज को पेशेंस होता है, वो हैंडल कर लेता है, लेकिन उसके पास भी उसका वो क्लर्क आके सिग्नेचर कर रहा है, एक तरह जज बोल रहा है, तो नुकसान आप ही का होगा इसमें। तो इट्स बेटर टू एंगेज, क्योंकि देखो अगर हम डॉक्टर नहीं है तो हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते, हम प्रिस्क्रिप्शन से गोली जाके, बिना प्रिस्क्रिप्शन के गोली लाना कहीं ना कहीं बोलते गलत है। तो सेम टाइम लीगल में मैं रिक्वेस्ट करूंगी पर्सनली हाथ जोड़कर कि आप किसी, अगर आपको कैपेसिटी नहीं है तो किसी जूनियर लॉयर को एंगेज करके उसको गाइड कीजिए कि ऐसे पूछना है। फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी, सेकेंडली किसी को लगता है कि मैं अपना केस अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, बट इतना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं खुद लीगल फील्ड से, मुझे पता है कि समटाइम मैं अपने 2 जूनियर को साथ में बिठाती हूँ, ते जज काय बोलला ते चेक करा आणि टाइपिस्ट काय टाइप करते ते बघा जरा नंतर बघा, और है ना वो विटनेस क्या बोल रहा है, मतलब मुझे भी ध्यान देना पड़ा, मैं कितनी जगह ध्यान दूं। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट की कभी कभी विटनेस ऐसी चीजें बोलता है जो मेरे इसमें नहीं होती है एग्जामिनेशन चिप में, तो आई कीप 2 बॉल पेन्स, एक रेड और एक ब्लू, तो मैं रेड से साइड में लिख लेती हूँ कि ये चीजें मेरे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, आई हैव टू आस्क दिस। तो आप सर सुनिए, ये सब चीजें कहाँ से आएगी आपके पास, और आपको अपना केस तो बेस्ट देना है। अगर हमारा बच्चा बीमार है, हम अपने बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना, तो अगर अपना केस डाला है, टाइम पास के लिए नहीं डाला है, किसी को हेरेसमेंट के लिए डाला है, तो आपको आपका बेस्ट व्यक्ति, बेस्ट लॉयर यूज करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अदरवाइज आई एम ओके विद इन पर्सन भी करने वाले, इवन सुप्रीम कोर्ट अलाउज दैट, आप ऑनलाइन चेक कीजिए, इट अलाउज दैट, लेकिन फाइलिंग लेवल तक ठीक है। जो जिरा होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वहां नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में, वो अलग चीज है, वहां पर भी होता है, बट वो डिफरेंट पार्ट है। वहां पर मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन वो कमीशन वगैरह अलग चीज होती है। यहाँ पर जो लोअर कोर्ट्स में होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में होता है, उसमें कई बार ये डिफिकल्टी आती है, और यहाँ बहुत मैटर्स पेंडिंग है, तो किसी को इतना पेशेंस नहीं कि आपको एक्सप्लेन करे प्रोसीजर नेचुरली, तो इट्स बेटर टू हैव अ जूनियर lawyer who understands your language, your terminology, and also puts your best part in the court. Yeah, maybe one can start with the consumer issues of your own. छोटी-छोटी चीजें RTA कर सकते हैं, but not जहां पर आपका बहुत बड़ी चीज है. Yes. Something very crucial, which is going to affect your life, right? Right. Ma'am, one participant is asking, is leading questions allowed in examination in chief and cross examinations? Cross examination allowed है, examination chief में allowed नहीं है, आपको objection लेने आना चाहिए. Ma'am, any concluding remarks from your end? I will tell you all one thing. I don't know how, when we'll meet in person or on online also. I'll tell all of you, try to read one judgment each day. And secondly, आपके पास कोई मैटर आ गया, जैसे ये सर ने बोला कि मेरे पास इन पर्सन मेरा मैटर है, आप इतना इजी है, अभी लाइफ इतना इजी हो गया, एट वन क्लिक में आपको तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, आप सुन सकते हो, तो गो थ्रू दैट। आई एम नॉट सेइंग सुप्रीम कोर्ट का ही सुनना है, आई एम सेइंग आप रीडिंग करो, आप कोर्ट में बैठो, जूनियर लॉयर्स आते हैं, एंड व्हेनेवर यू हैव टाइम ट्राई टू रीड। इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड, आई अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी इज बिजी, बट वन जजमेंट अ मंथ भी आपने एक मंथ में एक जजमेंट पे पकड़ लिया तो साल के 12 जजमेंट्स हो गए। शांता शेरके एक मराठी की, जितना मुझे नॉलेज है, वो बहुत बड़ी मतलब पोएटेस थी या लेखिका थी, हाँ, तो वो इतना अच्छा, वो उन्होंने एक वर्ड बोला था, माझ्या लिखाणात वाचनाचे ठसे उमटतात। उनको ये कहना था कि, मतलब मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था, इसलिए मुझे नॉलेज नहीं है कि वो मतलब किस तरह की लेखिका थी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छे से बोला वो चीज कि मेरे दिमाग में यहाँ बैठ गया कि मैं जो पढ़ती हूँ, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन माई टॉकिंग, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन माई आर्ग्यूमेंट, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन माई राइटिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप रीड किया करो, दैट्स व्हाई वी यूज लाइब्रेरी, फिर आप लाइब्रेरी का यूज करो, आप बुक्स यूज करो। Not possible, I have so many books, I may not be able to read everything, but I may be able to read some part of it. So reading is a key, and you can become your own eklavya.